forget to like, share and subscribe. Hello students, today we are going to discuss more question on domain and range of a function. Question number 1. fx equal to this. Find domain of this function. fx assumes real values if any quantity inside log is greater than 0. So x minus greatest integer x is greater than 0. X is greater than greatest integer x. When x is greater than greatest integer x? When x belong to set of real number minus integers z. You can verify your answer also. 0, 1, 2, minus 1, minus 2. If we take any number between 0 to 1, for example 1 by 2. So 1 by 2 is greater than greatest integer 1 by 2 means 0. 1 by 2 is greater than greatest integer 1 by 2 which is equal to 0. So 1 by 2 is greater than 0. So if we take any number between 0 to 1, it satisfies this equation. Any number between 1 and 2 satisfies this equation. But if we take any integer, 1 is not greater than 1, 2 is not greater than 2. I am not taking negative number also. Minus 1 by 2 is greater than इक्वल टू कितना होता है माइनस 1 बाई 2. माइनस 1 बाई 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीजर. सो अगेन इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन माइनस 1 टू 0 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. सो एक्सेप्ट इंटीजर. सो x बिलोंग टू r माइनस जेड. देयरफॉर डोमेन f इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस जेड. नेक्स्ट प्रॉब्लम. फाइंड द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू दिस. fx assumes real values if any quantity inside root, mean this quantity 1 minus this is greater than equal to 0. 1 minus root 1 minus root 1 minus x square greater than equal to 0. Next step, transpose. So 1 is greater than equal to root 1 minus x square. Both quantity are positive. For example, 3 is greater than 2. Then 3 square also greater than 2 square. Means squaring on both sides. So 1 square is greater than equal to 1 minus root 1 minus x square. Next step, send root 1 minus x square that side is greater than equal to 1 minus 1, 0. Again, both are positive quantity. So, squaring on both sides. So, 1 minus x square greater than equal to 0. Now, this is simple equation. Multiply by minus sign. So, sign of x square is positive. X square minus 1 less than equal to 0. Now tell me factor of this. X plus 1 x minus 1 less than equal to 0. Now find critical points. For critical points put x plus 1 equal to 0 or x minus 1 equal to 0. So we get minus 1 and 1. Less than equal to means x equal to minus 1 as well as x equal to plus 1. So including minus 1 and plus 1. Both x are positive. So we can use Weaver method.
in first interval positive, in second negative और third positive. पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ है y की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव मीन्स बिलो एंड पॉजिटिव. सो x बिलोंग टू इन विच इंटरवल प्रोडक्ट ऑफ दीज टू लेस देन इक्वल टू 0 इन मिडिल इंटरवल. सो x बिलोंग टू -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 and 1. So therefore domain f is equal to -1 to +1. Next problem. Find the domain of fx equal to √2 minus mod x plus √1 plus mod x. So first step, let fx equal to, let us consider this quantity is gx and this quantity is hx, where gx equal to 2 minus mod x, √2 minus mod x, and hx equal to √1 plus mod x. To find domain of f, we have to find intersection of domain of G with H. So first find domain of G. Gx assumes real values if any quantity inside √2 minus mod x is greater than equal to 0. Multiply by minus sign, so mod x minus 2 less than equal to 0. अब now find critical points. Put mod x minus 2 equal to 0. Mod x minus 2 equal to 0. So mod x equal to 2. So x equal to plus minus 2. So we get two critical points, plus 2 and minus 2. This quantity is less than equal to 0. Means when we put x equal to minus 2, 2 minus 2, 0, 0 equal to 0. So including minus 2 as well as including plus 2. अब now use Weviker method. In first interval, this quantity is positive, in this negative, or in this third one positive. So in which interval this quantity is less than 0? Middle interval. So x belong to minus 2 to 2 big bracket. So domain of G function is equal to minus 2 to 2. अब now find domain of hx. Clearly, for every x belong to R, mod x is always greater than equal to 0 and mod x plus 1 is greater than 0, means positive quantity. Therefore, domain of H equal to set of real number. We can put any value of x. Domain G equal to minus 2 to 2 and domain H equal to R. Therefore, domain F is equal to domain G intersection domain H equal to minus 2 comma 2 intersection with real number. So domain of F is minus 2 to 2. Next problem. Find the range of f of x equal to mod x minus 4 upon x minus 4. First write fx equal to mod x minus 4 upon x minus 4. X minus 4 in denominator means x not equal to 4. Not given in the question, but you have to take care कि x की वैल्यू कभी भी 4 नहीं हो सकती. अगर 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 minus 4 0, और we can't divide any number by 0. अब first rule of domain and range. Whenever any function is given, first simplify. Let us consider x minus 4 as y. So we get mod y upon y, where y is equal to x minus 4. अब now use property of mod. Property of mod is mod x
equal to x when x is greater than equal to 0 and minus x when x is less than 0. So now mod y equal to, mod x equal to x means mod y equal to y. When y is greater than equal to 0. लेकिन यही क्वेश्चन में दे रखा है x not equal to 4 means x minus 4 not equal to 0 means y equal to x minus 4 not equal to 0. So only take greater than sign. So y is greater than 0 and mod y equal to minus y and this y as it is when y is less than 0. Now simplify y upon y 1. Y is greater than 0 means x minus 4 greater than 0 minus 1 x minus 4 less than 0. So 1 when x is greater than 4 minus 1 when x is less than 4. So this is value of fx when x is greater than 4 or when x is less than 4. So range f. Range f means all possible output of fx. So there are two outputs minus 1 and 1. So range f equal to minus 1 or 1. Next problem. Find the range of function f defined by fx equal to this, where this symbol is greatest integer function GIF for every x belong to minus infinity to 1. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. First simplify. fx equal to 9 raised to power x minus 3 raised to power x plus 1. 9 we can write 3 square. So 9 raised to power x we can write 3 raised to the power x whole square minus 3 raised to power x plus 1 and write symbol of greatest integer function. For easier calculation, let us consider 3 raised to power x as y. So y square minus y plus 1. अब नाउ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो. फर्स्ट टू टर्म्स को कैसे करते थे अपन? यहाँ लिखते थे y और ब्रैकेट में क्या लिखते थे 10 क्लास में? हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स y माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर यानी 1/4. यहाँ जो भी नंबर है उसका स्क्वायर माइनस करते थे प्लस 1. अब नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y. y मीन्स वेयर y is equal to 3 raised to the power x. So now put 3 raised to the power x minus 1/2 whole square plus 3/4. Next step. This is simplest form. We have to find range of fx and x belong to minus infinity to 1. Since x belong to minus infinity to 1 implies minus infinity is less than x less than 1. Next step, this x lies between this and this means 3 raised to the power x also lies between 3 raised to the power 1 and 3 raised to the power minus infinity. Why? Simple, आप सभी को मालूम है 3 raised to power minus 2 is less than 3 raised to power minus 1 is less than 3 raised to power 1 is less than 3 raised to power 2. 3 की पावर में कुछ भी लिखें, अगर अपन एसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो अपना क्या आएगी वैल्यू? बड़ी आएगी. minus 2 is less than minus 1 is less than 1 is less than 2, then 3 raised to power minus 2 is less than 3 raised to power minus 1. That's why we can write. हम ऐसा हर बार नहीं कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन में कर पाएंगे. सो प्लीज टेक केयर. 3 raised to power minus infinity means 0. Why 3 raised to power minus infinity 0? Because 3 raised to power minus infinity we can write 1 upon 3 raised to the power infinity. And 3 raised to power infinity means infinity or 1 upon infinity means 0 is less than 3 raised to power x is less than 3. But here 3 raised to power x minus 1/2. So subtract 1/2 everywhere. 0 minus 1/2
So minus 1 by 2, 3 raised to power x minus 1 by 2, and 3 minus 1 by 2, 5 by 2. अब now square. This number lies between minus 1 by 2 to 5 by 2. Then square of this number. Square of this number. 3 raised to power x minus 1 by 2 whole square is greater than equal to 0 and less than 5 by 2 square means 25 by 4. Using number line, this quantity lies between minus 1 by 2 to 5 by 2. Minus 1 by 2 to 5 by 2. और इनके बीच में एक नंबर 0 भी होता है. अब माइनस 1 बाई 2 से 0 के बीच में सारे नंबर्स नेगेटिव और उनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव. यानी वैल्यू किधर मिलेगी आपको 0 टू 5 बाई 2. 0 का स्क्वायर 0 यानी इंक्लूडिंग 0 और 5 बाई 2 स्क्वायर कितना हो गया 25 बाई 4. नेक्स्ट स्टेप प्लस 3 बाई 4. सो 8 3 बाई 4. सो 3 बाई 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 is less than 8 3 by 4. 25 by 4 plus 3 by 4. 25 plus 3. 28 by 4 means 7. So this quantity lies between 3 by 4 to 7. Therefore, we can also write in this way 3 is to power x minus 1 by 2 whole square plus 3 by 4 belong to 3 by 4 to 7. अगर हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालें एनी नंबर बिटवीन 3 बाय 4 टू 7 तो क्या क्या वैल्यूज मिलेगी 3 बाय 4 टू 7 इंक्लूडिंग 3 बाय 4 एंड एक्सक्लूडिंग 7. और बीच में कौन कौन सा नंबर होता है चेक करो 6 5 4 3 2 1 और इसके इधर क्या आएगा 0. इफ यू टेक एनी नंबर बिटवीन 1 एंड 2 और उसका अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले तो क्या आएगा 1. 2 से 3 के लिए क्या आएगा 2. 3 और 4 के बीच में 3. 4 और 5 लेंगे तो क्या आएगा 4. तो इस पूरे नंबर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्या आएगा देयरफॉर दिस क्वांटिटी मीन्स एफ एक्स. दिस क्वांटिटी मीन्स एफ एक्स. सो एफ एक्स इक्वल टू अगर 3 बाय 4 से 1 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो 0 आएगा. 1 से 2 के बीच में 1 आएगा. 2 से 3 के बीच में 2 आएगा. 3 से 4 में 3. 4 टू 5 में 4. 5 टू 6 में 5 और 6 टू 7 में 6 और 7 ला ही नहीं रहे सो 7 नहीं आएगा. सो वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज दिस. देयरफॉर रेंज एफ इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6. नेक्स्ट प्रॉब्लम फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस. एफ एक्स assumes real values if any quantity inside root is greater than equal to 0 but root in denominator therefore greater than 0. So greatest integer x whole square minus greatest integer x minus 6 is greater than 0. For easier calculation, let us consider greatest integer x as y. So y square minus y minus 6 is greater than 0. Where greatest integer y equal to greatest integer x. अब now find factor of this. Factor of this y minus 3 into y plus 2 by splitting middle term. अब now draw number line. Put each factor equal to 0. So y equal to minus 2 and y equal to 3. Excluding minus 2 and excluding minus 3. Because when you put y equal to minus 2 then this quantity 0 and 0 is not greater than 0. Similarly when we put y equal to 3. 3 minus 3 0. 0 is not greater than 0. So don't take minus 2 and 3. अब now use Weaver method. In first interval positive, second negative और third positive. So
y is less than minus 2 or y is greater than 3. Next step, y means greatest integer x is less than minus 2 or greatest integer x is greater than 3. अब greatest integer x less than minus 2, it means x belong to minus infinity to minus 2 or x belong to 4 to infinity. Why? Use number line. minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 3, यानी x की कौन सी वैल्यू लें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे. अगर 3 के इधर वाली वैल्यू ली अपन ने 3.1, तो 3.1 की वैल्यू आएगी 3 और 3 से ग्रेटर करनी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. 3.2, 3.4, 3.99 तक वैल्यू कितनी आएगी 3. और जैसे ही 4 लेंगे तो क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 मीन्स 4 इज ग्रेटर देन 3, तो फर्स्ट वैल्यू 4 मिलेगी और बाकी वैल्यू कौन सी मिलेगी अप टू इन्फिनिटी, 4, 4.1, 5 अप टू इन्फिनिटी. सो x बिलोंग टू दिस. और ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन माइनस 2, तो लेस देन माइनस 2 मतलब माइनस 2 की इधर वाली वैल्यू लेके देखो आप. अगर इधर वाली वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1.5 रखोगे तो माइनस 2 आएगा और माइनस टू से लेस देन नहीं होता है. तो टेक एनी अदर नंबर, माइनस 2 के इधर कोई नंबर ले लो, माइनस 2.5 रखो तो क्या आ रहा है माइनस 3 और माइनस 3 इज लेस देन माइनस 2, यानी इधर की सारी वैल्यू ले सकते हैं अपन. सो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 एंड 4 टू इन्फिनिटी, और मीन्स यूनियन. सो देयरफॉर x बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी with 4 big bracket. We can also write this result in this way: x belong to set of real number माइनस 2 के साथ क्या आएगा बिग ब्रैकेट और 4 के साथ क्या आएगा स्मॉल ब्रैकेट, अपोजिट साइन, यानी पूरा पोर्शन और ये वाला बीच वाला पोर्शन छोड़ दिया अपन ने. देयरफॉर डोमेन f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर माइनस 2 to 4. In next lecture, we will discuss even and odd functions. Thank you. Have a nice day.